others because it allows them to do three essential things. And look at these three things from your professional career point of view. The first thing, if you have the quality of credibility, if you are a credible person, it will become very easy for you to establish trust and build relationships with others. आपका दूसरों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग या बॉन्डिंग आसान हो जाएगा. It will become easy if people can trust you and if people can believe in you. Build the foundation for influencing people with a different point of view and take your words seriously. कभी आपके करियर में अगर ऐसी सिचुएशन आई जहां आपका ओपिनियन किसी और के ओपिनियन से डिफरेंट है, if that person thinks of you as a credible individual, you will still be able to influence him with your thought process. वो आपकी बात को तवज्जो देगा, वो आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेगा. ये एक बड़ा फायदा है क्रेडिबिलिटी एज अ क्वालिटी हम में बिल्ड करने का. एंड थर्ड, very importantly, it helps you to establish confidence in others when you have very little work experience. तो ज्यादातर जो क्रेडिबिलिटी की क्वालिटी है ना, वो हम उन लोगों में देखते हैं या उन लोगों को हम ये क्रेडिबल का खिताब देते हैं जिनके पास बहुत वर्क एक्सपीरियंस होता है. वो प्रैक्टिस कर करके अपने स्किल को मास्टर कर चुके होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत ही क्रेडिबल इंडिविजुअल. बट उन लोगों का क्या जिनको वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है. तो अगर आप अपने करियर में बहुत जल्दी अपने अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, डीलिंग विद अदर पीपल, वोकल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, इन सब चीजों से अगर आप बहुत ही जल्द एक क्रेडिबल इंडिविजुअल का इमेज क्रिएट कर लेते हैं, then it will help you establish confidence in people even though you are new, even though you are junior, even though you are young. So these are some benefits of the quality of credibility in an individual. अब हम जो विजुअल क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विजुअल, तो विजुअल जो दिखाई दे और क्रेडिबिलिटी जो विश्वास और भरोसे के लायक हो. व्हेन आई से विजुअल क्रेडिबिलिटी, मैं एक ऐसी क्वालिटी की बात कर रही हूँ जो लोगों को अपनी आंखों से दिखाई दे. और ये क्यों जरूरी है? बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है. हम हम में जो क्वालिटीज लोगों को नजर आती हैं, वो क्वालिटीज लोग हम पे टैग करते हैं. विजुअल क्रेडिबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है, एक ऐसा टैग जो आप अपने हाथ में लेके मतलब अपने अपीयरेंस के थ्रू लोगों से कहते हैं कि मैं विश्वास के लायक हूं, मैं भरोसे के लायक हूं. अब सवाल ये उठता है कि हाउ डज अ प्रोफेशनल गेन विजुअल क्रेडिबिलिटी? हाउ कैन यू मेक अ पर्सन सी दिस क्वालिटी इन यू? क्योंकि अगर आप जाकर किसी से ये कहते हैं, व्हेन यू आर वेरी यंग एंड फ्रेश इन योर प्रोफेशन, इन योर करियर, अगर आप जाके किसी को ये कहते हैं कि मैं बहुत भरोसे और विश्वास के लायक हूं, शायद वो आप पे विश्वास ना करे. बट अगर वो क्रेडिबिलिटी आप में उनको नजर आती है और जो हम देखते हैं ना, उस पे हम ज्यादा आसानी से विश्वास कर लेते हैं रादर देन जो हम सुनते हैं. इसीलिए अगर कोई बड़ी चिड़ी हुई सी शक्ल बना के, if somebody makes a very sarcastic face and comes and tells you it was very nice to meet you, you don't believe that person because you don't see that happiness on the face of that individual. Whereas if that same person comes and says the same thing to you with a big smile, it was very nice meeting you, I'm so happy to see you, you believe what he's saying. So people believe what they see. And if you are able to communicate this quality of credibility visually, it will empower you as a professional, it will empower you in your career. So how do you gain credibility when you have very little work experience? When your probation will be over and you'll enter into your active work environment, into your active career as a officer of the railway department, how do you gain this visual credibility? So how do you build credibility fast? The first thing that you can use is your appearance. आप अपने visual appearance, आप जो पहनते हैं, आपकी hair style कैसी है, आपकी grooming कैसी है, that is one thing you can use to build visual credibility or to build credibility. The second thing you can use is your body language. आपके facial expressions कैसे हैं, आप कितना eye contact maintain करते हैं, आपके gestures कैसे हैं, आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, all of those things come into your body language. And all of those things contribute into your visual credibility. So if you are somebody who makes eye contact while talking, whose shoulders are always upright, who sits upright in a meeting,
If you are being spoken to, who nods when he or she is being spoken to, then you slowly start gaining that adjective of credible. Okay, this person is credible. ये विश्वास के लायक है, ये ध्यान से सुनता है, ये proactive है, ये active है. What is the third way of building credibility in yourself when you have very little work experience or very little work to prove that you are worthy of belief, you are worthy of trust? Your vocal and verbal communication. So vocal is your tone, pitch, volume of how you speak, and verbal is the language. What kind of language you use, how respectful is your language with which you speak. That is also one thing that you can use to build credibility in yourself as a professional very quickly. And last but not the least is your behavior, of course. आपके manners कैसे हैं, आप दूसरे लोगों को कैसे treat करते हैं. These are a few things that you can use to build credibility in yourself, in other people, so that those people who look at you, who meet you, who work with you, can see it, can see this quality in you. What I'm going to do is a quick small exercise. I'm going to show you some pictures, and I request you to share your feedback on the chat box. I'll just very quickly, quickly open the chat box also. Let's say you've gone to a gym. आप एक gym join कर रहे हैं to become fit, and जैसे ही आप उस gym में जाते हैं, उस gym का जो owner है आपको अपनी एक फाइल दिखाता है कि ये मेरे सारे trainers की profiles है. उन trainers का पिक्चर और प्रोफाइल उस फाइल के अंदर फाइल है, और ये 3 प्रोफाइल्स आप अपने ट्रेनर की उस फाइल में देखते हैं. And let's say, and you're looking for a personal trainer for yourself. So let's say those personal trainers look something like this in the pictures of the file that the gym owner gives you. Who do you think you are more likely to select as your personal trainer when you're going through the files? The center one, absolutely. Thank you. So most of us will select the guy in the center as a personal trainer for us. Let's move to another situation, another occasion. Imagine you're an employee in a bank, and on a typical Monday morning, 2 clients, one in the morning and one in the afternoon, walk in to get some work done at the bank. Who do you think you are likely to attend to with more seriousness and more focus? आप किसको ज्यादा attention और seriousness के साथ attend करेंगे? Client number 1 or client number 2? Most of us will end up attending to client number 2 a little more seriously, because the way he'll walk in dressed like that, suddenly automatically our subconscious response is that you start taking that person more seriously. Let's look at a situation number 3. Imagine you are a manager and hiring for an entry level position. Let's say आप अपनी team build कर रहे हैं और लोगों को hire कर रहे हैं, and these 3 candidates end up in your interview room with matching work experience and matching educational backgrounds. Who do you think you're more likely to? Who do you think you're more likely to select for the job? Candidate 1, candidate 2, or candidate number 3? Most of us will end up selecting candidate number 2. So what did we just do? What did we all do? We formed an impression, and based on that impression, we made a judgment about that person. And if I ask you, how do you think you did this? We did this based on very little information. But trust me, if I put you in a real life situation and the choices remain the same, आपका option बदलेगा नहीं. 95% of the people in this group who helped answer these questions will still end up making the same choice that you did right now with very little information. So when do you think we do this? Looking at them, forming an impression, making a judgment. When do you think you do this, and to whom are you doing it? We are doing this to everyone, and we do this all the time. The only thing is that we don't realize that we do it. ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जब हम किसी से मिलते हैं, उसका एक इंप्रेशन फॉर्म करते हैं, एक जजमेंट फॉर्म करते हैं, ये सब हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे होता है. हम कॉन्शियसली उस प्रोसेस को रियलाइज नहीं करते हैं. आप बचपन में किन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना शुरू करते हैं, फिर एक बार फ्रेंडशिप के बाद आपका एक्सपीरियंस उनके साथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, हम उस फ्रेंड के और क्लोज हो जाते हैं या दूर चले जाते हैं. बट इनिशियली जिन लोगों के साथ हम अपने फ्रेंडशिप्स बिल्ड करते हैं,
वो भी इसी प्रोसेस पे रिलाई करता है. वी लुक एट देम, वी फॉर्म इंप्रेशंस अबाउट देम एंड देन वी डिसाइड कि मुझे इसके साथ फ्रेंडशिप करनी है या नहीं. So this is what we are doing to everyone all the time. However, what we really forget is this is what others are doing to us too all the time. They're looking at us, they're forming impressions about us, and they're making a judgment about us. So who do you think? So how do you think you did this? How long do you think it takes to form like an impression in your mind the first time you see somebody? जैसे ही हमने पिक्चर्स देखे, some people shared their responses or reactions within 2, 3, 4 seconds. A first impression when you meet somebody for the first time normally takes between 5 to 7 seconds. 7 से 10 सेकंड के अंदर एक आम आदमी, a layman, forms a very quick impression about anything and anybody it sees. That includes us also. And why is this first impression so important? Why is this image so important? And इतने कम समय में, in 7 to 10 seconds, what is it that people are able to see based on which they are forming this impression about us? तो शुरुआत के 7 या 10 सेकंड में अगर आप किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो ऑलरेडी बात नहीं कर रहा है, उसकी वर्बल और वोकल कम्युनिकेशन तो इज आउट ऑफ द पिक्चर. You base your impression largely upon things that you're able to see. And what you can see is, are their clothes, is their grooming, it's their body language, it's the way they are behaving, their manners, how they are sitting, their gestures. ये चीजों के बेसिस पे लोग हमारे बारे में एक इम्प्रेशन और एक इमेज बना लेते हैं. और अगर इमेज को सिंपली डिफाइन किया जाए तो इमेज है क्या? Your image is you in the mind of another person. कोई और आपके बारे में क्या सोचता है, ये आपकी इमेज है. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने ऐसा सुना होगा ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. Why is your image, what people think about you, your perception so important to you? Or it should be in your professional career, what people think about you. Because the way people treat you depends directly upon their perception of you. वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, उसके बेसिस पे वो ये डिसाइड करते हैं कि वो आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे. सो ओनली इफ दे थिंक और क्रिएट एन इंप्रेशन ऑफ अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, ऑफ समबडी हु इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, विल दे ट्रीट यू रिस्पेक्टफुली. और कौन रिस्पेक्टफुली ट्रीट होना नहीं चाहता? सो दिस इमेज, impression, appearance is so important because people's behavior towards us depends upon their perception of us. और ये बात हम जितना जल्दी समझें, हमारे लिए अपने प्रोफेशनल करियर्स में एटलीस्ट उतना ज्यादा अच्छा होगा. So who do you think is responsible for your image then? For the impression that you create? It's you. A powerful, positive, professional image is a choice. क्योंकि ये करना आसान नहीं है. एक पावरफुल पॉजिटिव प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एफर्ट चाहिए. और बहुत सारे लोग ये चीजें नहीं करते. जो करते हैं वो उससे बेनिफिट करते हैं. जो लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा अपीयरेंस कैसा है, और ये अपीयरेंस दूसरे लोगों को क्या कम्युनिकेट कर, जो ये सोचते हैं कि मेरा बिहेवियर कैसा है, ये बात बोलने से पहले मुझे इसको अपने माइंड में पहले सही तरीके से फ्रेम करना चाहिए. मैं किस तरह बैठा हूँ, मैंने किसी से क्या कहा, किस टोन में कहा. जो लोग ये सब सोचते हैं, इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने अपीयरेंस, बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं, वो लोग उस बात का फायदा उठाते हैं. और जिस दिन आपने एक बढ़िया प्रोफेशनल की इमेज क्रिएट कर ली, और कंसिस्टेंटली रह करना पड़ता है. यू हैव टू कंसिस्टेंटली लुक प्रोफेशनल, you have to consistently behave and talk like a professional to create an overall dominant image of a professional person. पर अगर आप ये कर लिए ना, तो आपकी जिंदगी में एक बढ़िया इमेज से बड़ा एसेट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता. वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा होता है. उसी तरह when you have a very positive, professional, powerful image created in the minds of your colleagues, your seniors, that image proves to be a very powerful asset for you.
So what we are going to do is I'm going to share with you 3 reasons why you must invest in your image or in your appearance, how you look. The first reason is your image affects you first. हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हम अपने आप को कैसे देखते हैं, वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और अगर आप मुझसे पूछें, जिस इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, इफ ही फील्स कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ, उसे दुनिया में और किसी क्वालिटी की जरूरत नहीं है। हर चीज अपने आप एक जगह पे फॉल करने लगती है। द पीसेस ऑफ द पजल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस व्हेन यू गेन कॉन्फिडेंस इन योर ओन सेल्फ. So a positive self-image generates a lot of self-confidence, and a confident individual is a productive individual. Confidence propels productivity. और अगर the day you dress well, it starts impacting your body language, it starts impacting the way you feel about yourself, you feel confident about yourself, it adds greatly to your self-confidence. So your image affects you first. Wear a very good, smart, professional dress one day, groom yourself perfectly, and look at yourself in the mirror. And you see that positive image that you see back of yourself, how it boosts your self confidence and how that confidence affects your behavior with people on that particular day. Do this exercise. Reason number 2, why is it so important to invest in your image? ये मैं एक सिचुएशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी. इफ लेट्स से यू हैव अ 3-year-old बेबी इन योर हाउस, एक 3 साल का बच्चा है जो रात के 3 बजे जोर जोर से आपके घर में रोना शुरू कर देता है, एंड यू डोंट नो व्हाई दिस चाइल्ड इज क्राइंग एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई दिस बेबी इज क्राइंग. सो इन अ रश यू पिक अप द बेबी एंड गो टू द हॉस्पिटल्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट. और जैसे ही आप उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, आपको ये आदमी दिखता है जो कहता है कि मैं इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूं, आप बच्चा मुझे दे दीजिए. हम में से 95% ऑफ लोग अपना बच्चा इस इंसान के हाथ में नहीं देंगे. Whereas in the same situation, the same man comes in front of us like this. 99% of all of us will not even think twice before handing over the child to this guy. That is simply because in the second picture, this man fits into the stereotypical image that we have about a professional. हमारे दिमाग में एक डॉक्टर की छवि है, डॉक्टर ऐसा दिखना चाहिए. जब वो डॉक्टर उस छवि जैसा दिखता है जो हम अपने माइंड में रख के बैठे हैं, हम उस पर ज्यादा आसानी से विश्वास करते हैं, ज्यादा आसानी से भरोसा करते हैं. उसी तरह एक रेलवे ऑफिसर और ऑफिसर ऑफ अ रेलवे डिपार्टमेंट की एक इमेज है माइंड में, या एन ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसकी एक इमेज है माइंड में लोगों के. जब आप उस इमेज में मोटे तौर पे बैठते हैं ना, फिट होते हैं ना, तो आप पे विश्वास करना और आप पे भरोसा करना लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है. इट बिल्ड्स विजुअल credibility more easily, and therefore you should invest in your appearance. To be perceived and treated as a professional or a credible person, we need to look like one first. So if you want people to think of you as a professional officer of the railway department, the first step is to start looking like one. That's the first step. So 3 universal factors that form your image. वो 3 factors जो आपकी image form करते हैं, वो ये है: your clothes, your body language, your behavior. ये 3 चीजें मिलके आपके बारे में लोगों के माइंड्स में एक इमेज क्रिएट करना शुरू करती है. फर्स्ट इंप्रेशन का इंपॉर्टेंस हमेशा रहता है, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बढ़िया है, तो उसके बाद जब भी लोग आपसे मिलेंगे वो आपको उस पर्दे के थ्रू देखेंगे और एक बढ़िया इमेज क्रिएट करने में आपको आसानी हो जाएगी. If you create a negative first impression or not a very powerful first impression, the next time they meet you, they see you again through the curtain of the average first impression. And therefore, building a powerful image in the long run will become a little more difficult. So we'll start with the first part of image building, which is clothes. So I'm going to do like a detailed session, and I'm going to share a lot of pictures, visual images that will help you identify what I'm talking about when I talk about clothes. However, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको गुड क्लोथ्स पहनने हैं तो महंगे ब्रांड्स पहनने हैं, आपको किसी फिल्म स्टार की तरह दिखना है, या मैं ये चाहती हूँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल, प्रिटी, ग्लैमरस या हैंडसम या फैशनेबल लगेंगे. When I say good clothes and I say a
an image you project. I mean something in your visual appearance that helps you move towards your goals. So what I mean is that you should look appropriate. Appropriate मतलब क्या? आप जहाँ जाते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि आप उस जगह को belong करते हैं. So which means if you are at work and in the office, from your clothes and appearance, you should look like you're working and you're serious about that work. And therefore, when people dress very casually or dress down a lot, a pair of shorts or a denim and a t-shirt to work, they actually look like they belong in a cafe or they are doing some errand or they are in a social situation. They are very relaxed. They don't look like they are in the office. So appropriate means appropriate for the occasion, appropriate for the role you play. आप ऑफिस में एक लीडर है, सीनियर है या जूनियर है, फॉलोअर है. सो अप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन, फॉर द रोल यू प्ले एंड फॉर द ऑडियंस. आप किन लोगों से मिल रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, ये लोग आपके बारे में क्या सोचें. आपकी अटायर इन सब क्राइटेरिया के लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपके क्लोथ्स. दूसरा, योर इमेज शुड बी ऑथेंटिक. You should look like who you are. You should be absolutely comfortable in what you are wearing physically and psychologically. शारीरिक और मानसिक तौर पे आपको कंफर्टेबल फील करना है और इसीलिए बहुत सारी लड़कियां जो इंडियन क्लोथ्स में कंफर्टेबल फील करती हैं, माय रिक्वेस्ट टू देम इज प्लीज डोंट वेयर वेस्टर्न. You don't need to wear Western clothes to look formal. You can look very formal wearing Indian clothes, and that will also be a part of my discussion today. For all those girls who love to wear Indian clothes, I will share dressing options for you in Indian clothes. So you need to feel comfortable. जब तक आप अपने कपड़ों में comfortable feel नहीं करेंगे ना, आपका सारा ध्यान आपके कपड़ों पे रहेगा, आप जो काम कर रहे हैं उस पर कभी नहीं होगा. So you need to look appropriate, you need to look authentic, you need to look attractive. We should always dress to look good. So wear clothes that are in sync with your body shape. Wear clothes that look good on your face, skin color. And our objective is that we should look nice. यहाँ handsome, glamorous लगने की बात नहीं, but we should look nice. कोई हमें देखे तो उसे अच्छा फील होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए. And the last is affordable. अच्छे लगने के लिए बहुत पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है. It's not what you wear, it's how you wear it. So if what you wear you cannot afford, you will always be more worried about those clothes rather than what you have to do. तो अपने बजट के अकॉर्डिंग शॉपिंग करिए. महंगे ब्रांड्स पहनने से हम अच्छे लगेंगे, ऐसा ना मैंने कभी कहा है, ना मेरा कभी भी मतलब होगा. एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक चीज, एक डिस्क्लेमर या एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ. दैट इस स्लाइड के बाद हम जितनी भी स्लाइड्स देखेंगे उस पर बहुत सारे कपड़ों के पिक्चर्स होंगे, pictures of clothes. But that does not mean that I am saying that your clothes are everything and that your appearance is everything. No. Clothing can never take the place of essential knowledge and skills or abilities required to do your job. Never. However, your clothes can be a tool, like your mobile phone, like your laptop. It can be a tool that you can use to achieve your goals faster. Your goal is the boss and your team thinking good about you. Your clothes can help you do that. And वैसे भी when you're going to step out of the house, you'll be wearing clothes. You'll be wearing something, right? Then might as well wear clothes that work for you rather than clothes that work against you. So I'm not saying that your clothes are everything. I'm not saying that अगर आप बहुत smart दिखेंगे तो आप life में बहुत आगे जाएंगे. नहीं. Essential knowledge and skills, abilities को कोई भी चीज जिंदगी में replace नहीं कर सकती. पर आपके कपड़े आपकी मदद कर सकते हैं टू अचीव योर गोल्स फास्टर एंड टू अचीव योर गोल्स मोर इजीली. तो जब मैं अप्रोप्रिएट की बात करती हूँ, मेरा क्या मतलब है? व्हेन आई यूज द वर्ड अप्रोप्रिएट, आई मीन्स अप्रोप्रिएट मतलब हमें कहाँ क्या पहनना है. हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि अप्रोप्रिएट ओकेजन के लिए क्या सही ड्रेस है. जब आप किसी ओकेजन के लिए कबर्ड खोल के खड़े होते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ मुझे क्या पहनना चाहिए, उस सवाल का जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे. Appropriate attire for the occasion, appropriate attire for the role you play, and appropriate attire for the audience you are going to meet. Now, what I'm going to show on the screen to you are a few words. ये कुछ adjectives हैं जो मैं चाहती हूँ कि इनमें से आप 5 अपने लिए choose करें. When you enter a room as an officer of a railway department, what are the 5 things that you want people to think about you?
What are those 5 qualities that you want people to see in you? जो आपको जाके बोलना ना पड़े कि मैं बड़ा confident, जो आप में दिखाई दे. Select 5 for you. I'll give you a minute to select 5 such qualities from the screen right now. And after you write them down, keep that list with you till the end of the session, because I will help you identify how to communicate these. तो जो 5 क्वालिटीज आपने अपने लिए चूज करी है वो लिख के रखिए, सो दैट यू रिमेंबर थ्रू द सेशन. अगर आप वो ये मैसेजेस अपने अपीयरेंस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं. And if anyone has quickly written them down, one of you can even share it on the chat. Okay, I'll move forward. Now, what are the struggles? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स अक्सर 5 क्वालिटीज में सिलेक्ट करते हैं: इंटेलिजेंट, स्मार्ट, लीडर, नॉलेजेबल, अप्रोचेबल. लेट्स से ये 5 क्वालिटीज उन्होंने अपने आप में सिलेक्ट करी. But the problem here is that most people don't know how to communicate these messages. So they are confused कि अगर वो एक बोर्ड मीटिंग में जा रहे हैं and they want to look intelligent, they want other people to think that this guy is very intelligent, he's very smart and he's extremely dependable. अब कोई जूनियर एक बोर्ड मीटिंग में जाके ये तो बोल नहीं सकता कि मैं बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और केपेबल हूँ. उसको ये मैसेजेस विजुअली कम्युनिकेट करने होंगे. और ज्यादातर लोग इस कंफ्यूजन से स्ट्रगल करते हैं कि मैं ये मैसेजेस कैसे कम्युनिकेट करूं. कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट टू वेयर टू बी परसीव्ड पॉजिटिवली. तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है स्टाइल स्केल. इट्स अ टूल दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू टुडे. That tool will help you identify what clothes to wear for what occasion. So before I dive and share that tool with you, I want you to do a small, oh yeah, I forgot to mention this style scale as a tool has been created by Judith Rasvan. The lady you saw who was handing over the certificate to me in my introduction slide, she is Judith Rasvan. She's created this tool, and I extensively, a lot of corporates use it for uniform designing. A lot of people use it on a daily basis to decide what they want to wear on a particular occasion. So before I actually share the tool with you, if I were to ask you to match the following: ABC with 1, 2, 3, what would you say? Match the following of ABC with 1, 2, 3. If you could share your responses in the chat box. No, Mr. Shiva, matching ABC with 1, 2, 3. So, okay, so you are saying C1, A2, B3. Yeah, okay, I get it. I got it. So, let's see what others also say. C1, B3, and A2. Now, if you notice, most of us, and we are almost 65 to 70 people on the call right now, most of us, yeah. So Miss Simran has also said C1, A2, B3. Absolutely, bang on. हम इतने सारे लोगों ने इन 3 लोगों का मैसेज या विजुअल कम्युनिकेशन सिमिलर तरीके से अंडरस्टैंड किया. Your interpretation of the message that they are communicating and all of us interpreting the message that they are communicating is absolutely the same. मतलब इनके कपड़ों में कोई तो एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से सब लोगों को वही सेम मैसेज मिला. तो अगर ये लोग ये मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम समझ जाए कि इन क्लोथ्स की कम्युनिकेशन कैसी है, तो हम भी अपने अटायर से लार्जली, मोटे तौर पर एक डोमिनेंट मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करें, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द 3 ऑफ देम, अगर सिर्फ कपड़ों पे ध्यान दें,
Apart from body language, if we look objectively at what they are wearing, you will notice that the colors are different. You will notice that the fabric of the garments that they are wearing is totally different. इस लड़के की जो टी शर्ट है उसको अगर हम ऐसा गोल घुमाएं तो एक बॉल बना सकते हैं इतना छोटा सा, लेकिन जो सेंटर में मेल है उन्होंने जो जैकेट पहना है उस जैकेट को मैं 2 या 3 बार से ज्यादा फोल्ड भी नहीं कर सकती। तो मटेरियल का फर्क है, फैब्रिक का फर्क है, कलर का फर्क है, उस गारमेंट के शेप का फर्क है। शू के शेप्स देखिए, शूज देखिए, उनके बेल्ट्स देखिए, एक्सेसरीज देखिए, हर चीज में फर्क है। और इन डिफरेंसेस की वजह से जो मैसेज वो कम्युनिकेट करते हैं उसमें भी फर्क है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज try to look at the style scale, and I want attention and focus now for just these two slides. They are the most important slides of my presentation. If you understand this well, then it will become very easy in the future to dress comfortably for a wide variety of occasions. तो स्टाइल स्केल क्या है? स्टाइल स्केल एक ऐसा स्केल है जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और वो स्केल एक फ्रॉम 1 to 4 ऊपर जाता है। In the what does the style scale say? The style scale says that level 1 is the lowest level. So when you're dressed at level 1, from your clothes you start communicating, I'm having fun, I'm very casual, I'm agreeable, I'm very responsive, I'm unofficial, extremely relaxed, I'm chilling in life, I'm having fun. The minute you go a little level up from level 2 to from level 1 to level 2, you suddenly start looking and communicating a message of a little more seriousness. आप बोलते हैं मैं रिलैक्स्ड हूँ, कोऑपरेटिव हूँ और बहुत अप्रोचेबल हूँ, बट आई एम डूइंग सम सीरियस वर्क, आई एम नॉट चिलिंग, आई एम नॉट हैविंग फन, there is some amount of serious work in my hand that I am doing. Then we go a notch higher to level 3. When we dress at level 3, we start communicating a little more seriousness. Now we start looking dependable and capable. But हम तो भी approachable तो लगते हैं, very approachable. A little more serious, a little more authoritative than level 2. And the last topmost level is your level 4, where you look very authoritative, you look extremely credible, you look like a leader, and you look most official and most formal. अब आपका ये सवाल होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस लेवल पे ड्रेस्ड हूँ? ये आइडेंटिफाई करने के लिए स्टाइल स्केल में कुछ क्लूज या क्यूज दिए गए हैं, which says that if the outfit, the garment that you're wearing, when it does not have a collar, जब आपके गारमेंट पे बिल्कुल कॉलर नहीं होता, that's when you are at level 1. You communicate most fun, least serious. आप you're communicating I'm very casual, I'm having fun. थोड़ा और सीरियस लगने के लिए हम अपने गारमेंट पे एक कॉलर अटैच करते हैं. The minute your garment or your outfit has a collar, you start looking a little more serious. You look very cooperative and relaxed, but you look like you're doing some work. Then comes the more serious and a little more authoritative level, level 3. When you wear a jacket, which doesn't match with the lower, an unmatched suit, that is when you start looking authoritative. You look formal, but you still look approachable. However, the last most formal level 4, where you look like a leader, very official, is when you wear a matched suit. When the jacket and the trouser or the skirt, when the fabric is exactly the same, that's when you reach level 4. So let's look at some pictures to understand these levels that I have just discussed with you. All of these people that you see on the screen right now are wearing a matched suit. They are communicating the message that we are very formal, we are leaders, business owners, most formal, most official. I can't look more formal or more official than this. That is your level 4, a matched suit. Now look at these guys. Can you see that the authority between them and them has lowered a little? These people look a little less formal than the ones on this slide. So an unmatched suit, a jacket, gives you authority, it gives you power, but it makes you look approachable also. Here we look a little unapproachable. But an unmatched suit gives you that formality with
approachability. So you look credible, you look formal, but you look approachable also. Now is your level 2. Notice everybody in this picture has a collar on their outfit. So what I'm wearing today dressed is level 3. I'm wearing an unmatched suit. All of these people are at level 2. They don't look very formal, they don't look very official, but they don't look like they're having fun or they're chilling. They look serious, they're doing some serious work. They have some serious work at hand. And last is your level 1. When you wear something which doesn't have a collar, it suddenly dresses you down and makes you look very casual and communicates the message that you're having fun. So, therefore, this is the last level that you dress on when you're dressing in the department as a railway officer. So, at work, this is the last level. Dressing below level 2, going and dressing at level 1 for your professional occasions can be like the red zone. So my recommendation would be that make level 2 the last level you dress at. And the girls can simply have a Chinese or a regular collar on their tunics or their shirts or the kurtas that they wear, and they will come to level 2. See all of them together and you'll notice how the authority drops. How he's looking so formal and the authority suddenly drops when we go to level 1. That's for women. The authority dropping from level 4 to level 1. The Indian style scale for girls who love to wear Indian, that's your level 4. You match the fabric and the color of the jacket to the sari. These are solutions and recommendations that we have given to a lot of women I have worked with. Even one-on-one consultations, bankers, lawyers, chartered accountants who have got clothes like this stitched because they are leaders and they love to wear Indian. That's your level 4 Indian for men. A band gala or this Jodhpuri suit matched is like a very constitutional, formal attire for like a government constitutional attire. So it looks extremely formal and looks extremely authoritative, and you could wear this also. This is more like your Indo-Western, but communicates the same authority. Level 3 in Indian, simply match the jacket to the sari or the kurta or the salwar kameez that you're wearing and you dress at level 3. There you are. That's your level 2. Simply add a collar to the blouse or to the kurta and it elevates you to a higher level. And that is level 1. And therefore, the girls too must try and stay away from level 1 as much as possible. If you're somebody who cannot wear a collar at all, make sure you wear a very high neckline. That's high level 1. So low U-cut, V kind of necklines without a collar are kind of not very professional. Now, though it says golden rules, but I don't believe in strict rules. You can treat them as guidelines. What I'm going to be sharing with you in the future slides for the next 10 minutes are just guidelines for your attire or for your clothes, for your dressing. If you have a question at that point of time, immediately put it in the chat box. If I can, I'll address it. Otherwise, we'll pick it up later. So these are some guidelines that you can use while you're shopping for your clothes, while you're dressing up for an occasion, or while you're making up an outfit for a particular situation for yourself. Use these guidelines to make better shopping choices, smarter shopping choices. जब आप shopping पे जाते हैं, तो आप ये देखिए कि आप ज़्यादातर कौन से कपड़े पहनते हैं. अगर आप सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक अपना वर्क वेयर पहनते हैं, वो कपड़े पहनते हैं, आप काम पर हैं, तो आप अपने हफ्ते का 70% टाइम तो वर्क क्लोथ्स में गुजारें. तो आपके कबर्ड और वार्डरोब का 70% एरिया वॉल्यूम भी वर्कवेयर होना चाहिए. अपनी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करिए और अपने वार्डरोब को अपनी लाइफस्टाइल से हार्मोनाइज करिए. योर वार्डरोब एंड योर लाइफस्टाइल शुड बी इन हार्मनी. फॉर अ होम मेकर, एक होम मेकर या हाउसवाइफ के लिए कोई फॉर्मल प्रोफेशनल ओकेजन नहीं होता, तो उनको फॉर्मल प्रोफेशनल ओकेजन कपड़ों की जरूरत ही नहीं है. दे कैन जस्ट हैव 10% ऑफ दोस फॉर सम सीरियस ओकेजन्स. But for a person who's spending 70% of his week at work, at least 60% of his wardrobe should be only work clothes, because that's what you'll be wearing maximum. So these are some guidelines that you can use to create a wardrobe like that. Remember, darker and duller colors communicate more authority.
So there's a dark blue and there's a light blue. Darker colors communicate more authority. There is a bright blue, there is a light blue. Lighter colors, or there's a bright blue and there is a dull blue. Duller colors communicate more authority. So darker and duller communicate more authority. Brighter and lighter colors communicate less authority. So this is a light color and that's a dark color. And here you see a bright color. Therefore ये तीनों ज़्यादा formal और authoritative colors हैं और ये दोनों थोड़े कम. This man, though he looks formal, professional in his level 4, owns a fashion house in Bombay. तो उसको लेवल 4 पे अगर ड्रेस करना तो वो एक ब्राइट कलर पहन सकता है क्योंकि द मैसेज और कम्युनिकेशन ऑफ हिज अटायर इज एंटरटेन. ही इज इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैशन. बट यू हैव टू डोमिनेंटली कम्युनिकेट सीरियस. योर वर्क इज सीरियस. You're dealing with serious kind of work. So these are some colors that are more darker, duller and will communicate more authority. ये brown और ये navy blue, ये दो colors, the reason I've put them is this brown especially looks very good on Indian skin. Whether you're a fair, medium or dark complexioned man, this particular brown and this particular blue looks good on most people. Somebody is asking, ma'am, will half sleeve shirt be considered in formals? If yes, what will be the level? That's a brilliant question. I'll answer it in the next two slides. I can't see the name of the person. Ravinder ji, I'm going to answer this question in the next slide. Just give me some time. But that's a good question. So darker, duller colors communicate more authority. This is for the women. You see how when we move from brighter to duller and to darker colors, these girls will communicate more authority than these girls. So remember, for you, if you want to look more authoritative and seniors, duller colors. If you want to look more authoritative and serious, then duller colors are your best option. That's in your Indian wear. Dark and dull colors over light and pastel colors. So girls, when you go out shopping and you're buying kurtas for work, remember, this is a Chinese color. See, they're at level 2. These colors, the darker, duller ones, will look more authoritative than this light color. Now, add bright colors in less quantity or less amount. For people who love to look creative, not fashionable, but creative and interesting. Bright colors हमारे outfit को interesting बनाते हैं, ज़्यादा attractive बनाते हैं. How can a man add bright color? With the help of a tie. So when you go out to buy a tie, buy the brightest color possible. A nice burgundy, red, yellow combination of these bright colors. उसका दूसरा फायदा ये भी होता है, एक तो आपका पूरा आउटफिट ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगता है. उसका दूसरा फायदा ये होता है कि ब्राइट कलर्स हमेशा अटेंशन कैच करते हैं और एक मैन की टाई उसके फेस के पास होती है. So this also brings the attention of the viewer right next to your face. And the only body part, your body part, that should attract attention in a business environment is your face. Because when people get attracted to your face, they tend to make more eye contact, and good eye contact leads to better communication. तो जब आप किसी प्रोफेशनल ओकेजन के लिए तैयार होते हैं, आपका एम ये होना चाहिए कि सारा अटेंशन आपके फेस पे आना चाहिए, बॉडी के किसी और पार्ट पे नहीं. एंड द टाई डज दैट वेरी ब्यूटीफुली. For the women, we have more options. You can wear earrings or accessories, scarves. If you're wearing Indian clothes, your dupatta, the border on the sari, all of these things, some makeup will help you bring attention on the face, or will also help you, allow you to add some bright color in your outfit. Remember, layers are always more authoritative than no layer. So this guy on the left is wearing a jacket, and that jacket expands his body image and therefore makes him look a little more authoritative than the man without the jacket. Even though he looks so formal and so professional, the way he's dressed, but this guy, because of his jacket, looks a little more authoritative. So layers will always add more seriousness and authority to your outfit than no layer. And if you are somebody who cannot wear a full sleeves jacket right now, पहली बात तो ये कि 5 से 7 साल बाद आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा ही कि यू विल बी कंपेल्ड टू वेयर अ जैकेट. अभी नहीं तो 3-4 साल बाद तो होगा ही. तो आप अभी से साइकोलॉजिकली एक जैकेट पहनने का कंफर्ट बिल्ड करना शुरू कर दो. यू विल हैव टू बी, अगर आप किसी फॉरेन डिग्नेटरी से मिलेंगे, किसी फॉर्मल ओकेजन में जाएंगे, तो एक जैकेट
पहनने की नीड तो पैदा होगी, but if you're somebody who just cannot wear a jacket right now and wants to take a baby step towards it, this is a brilliant option, a Nehru jacket. A lot of people have started wearing a Nehru jacket, and if you see, you match the color of the Nehru jacket with the trouser, it looks even more authoritative. दो नेहरू जैकेट है लेवल 2, ये लेवल 3 नहीं है, लाइक अ फुल स्लीव जैकेट, बट ये बहुत वेरी हाई लेवल 2 है. दोज ओकेजन जहां आप अपने डे टू डे वर्क के लिए भी किसी से मिलने वाले हैं, यू वांट टू रेज योर अथॉरिटी और लुक मोर सीरियस, अ नेहरू जैकेट विल मेक इट मोर इजियर. इसे पहनना भी ज्यादा आसान है क्योंकि इसके फुल स्लीव्स नहीं है, तो हमारे वेदर और टेम्परेचर एनवायरनमेंट में भी हमें ये मदद करता है. एंड फॉर द गर्ल्स दे कैन डू द सेम थिंग ऑन देयर इंडियन क्लोथ्स. So a layer will always add some more authority. Now the question that Ravinder ji asked, remember skin show is inversely proportional to the authority you communicate. उसका मतलब जितना ज्यादा स्किन शो उतनी कम अथॉरिटी हम कम्युनिकेट करेंगे. तो अगर हम इन दो मेल्स को देखें साथ, दिस गाय इज वेयरिंग अ टी शर्ट एंड हैज अ लॉट ऑफ नेक विजिबल, and he's pulled up his sleeve, so he has a lot of skin visible on his arms. If you compare him with another guy where no neck or no sleeve is visible, he looks more authoritative because there's less skin show. Similarly with these two girls, this is a half sleeve, this is a full sleeve. More covered garment will help you communicate more seriousness and more authority, always. And now the question that you asked, Ravindraji, your full sleeves will always be more authoritative than the 3/4 folded sleeve, which will be more authoritative than a half sleeve shirt. So I understand in a weather like India where it gets very hot and humid in some parts, but a half sleeve shirt shows more skin and hence is the least authoritative in the hierarchy. अगर हम most से least की तरफ जाएंगे ना, तो hierarchy में जितना स्किन शो, यहाँ पे इन्होंने टाई भी नहीं पहनी, therefore the skin on his neck is also more visible. So that is a pointer that you can keep in mind. There you have it for Indian wear. The more skin you show, the less authority you will communicate, and therefore she will look more serious, more formal, more professional. This is a tip for the men. Not if you are a man who is very wide at the waist. So if you are somebody who has a belly, अगर आपकी waist पे सारा fat deposit है, तो maybe this guideline will not apply to you. But if you are somebody who has a balanced body and not a very wide waistline, then try and wear a lighter color on top and a darker color below, because that helps create a contrast in the overall outfit. अगर आप दूर से देखेंगे तो द गाय ऑन द राइट विल कैच योर अटेंशन फर्स्ट बिफोर द गाय ऑन द लेफ्ट. इट्स सिंपली बिकॉज उसकी शर्ट और ट्राउजर में बहुत स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है. तो अगर ये कॉन्ट्रास्ट अपनी आउटफिट में आप लाते हैं, इट विल वर्क फॉर यू, इट विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन. If you notice amongst both the guys, the guy on the right, they're both very formally dressed, both are at level 2. But because of the contrast, the guy on the right looks more serious than the guy on the left. Do not reverse this combination and try and stay away from very bright colored shirts. They just take away that seriousness and authority and bring in the fun element. They make you look relaxed, they make you look more casual. And some work environments, some places, this may not work for you at all. So this shirt is probably still okay, maybe even this one, but the other two are very bright, and try and stay away from brighter colors like in such large quantity on your shirts. Now what I'm going to show you is what we call image makers and image breakers. But professional image makers, कुछ चीजें जो आपकी प्रोफेशनल इमेज को पावरफुल करेंगी और कुछ चीजें जो आपके प्रोफेशनल इमेज को हर्ट करेंगी. इसका मतलब ये नहीं कि जो इमेज ब्रेकर्स में मैं दिखा रही हूँ वो आप पहन नहीं सकते हैं. प्लीज चूज टू वेयर देम फॉर योर पर्सनल एंड फॉर योर सोशल ओकेजन्स. सो व्हेन यू थिंक ऑफ शर्ट्स, a solid shirt is the most formal, most professional, or pinstripe, chalk stripe, checks, small checks. These are image breakers. These kind of patterns, please keep for your trips to Goa and your vacations and your holidays. Don't wear them to go. They will take away that professional vibe from your appearance totally. Length of a tie, I have observed most men make a lot of mistakes when it comes to the correct length of a tie. So I thought this would be a good thing to discuss also. This definitely is short. And when you wear a short tie, body का जो proportion है ना, वो disturb हो जाता है.
एक करेक्ट लेंथ जो मैं आपको दिखाऊंगी वो इसीलिए डिसाइड की गई कि उससे आपका बॉडी प्रोपोर्शनेट लगता है. ये लेंथ आपके बॉडी पे यहाँ ध्यान चला जाता है. And if like this man, if you have a wider waist, a short tie is going to do a lot of damage. It will bring attention of people looking at you right at a place where you don't want to. So that's a wrong length. That's a long length of a maximum ये fastener तक. That's it. उससे लंबी आपकी टाई नहीं होनी चाहिए. Otherwise आपकी body disproportionate लगने लगती. So formally this guy is dressed, but look at the length of his tie. Same with him. So the length of the tie is the correct length is this. And if you are somebody like him, मतलब अगर आपको यहाँ बहुत weight है या आपकी waist बहुत wide है, तो ये combination आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा. It will make you look slimmer. But अगर आप ऐसा कलर पहनते हैं, medium shirt और medium दोनों dark है, तो अपनी tie को बहुत contrasting रखिए. Otherwise आप बहुत dull लगने लग जाएंगे. यही combination पे अगर एक dark tie पहना देंगे, इसमें start looking dull. इस पे attention और focus जाएगा ही, and you don't want that. So wear a contrasting tie which will take attention right up to your face. If I ask you about this guy, he's dressed at level 4, guys. He's wearing a match suit, but he doesn't look punched with power, and he's not having a very powerful appearance. Can you tell me some quick reasons why? Very quickly on the chat box. Why do you think he being on level 4 still does not communicate that much authority? What is not working for him? Tie length, fantastic. The color of the tie, the belt, brilliant. Very good observation. So the length of the tie is absolutely not working. His shoes, I agree. The shoe and the color of the belt is just off, and it's off center. It's not even in the center. Color bilkul bhi contrasting. It's doing no advantage to him. If you notice, the length and the fit of the trouser is also very loose and very long. So length of the trouser, yes, Mr. Ritesh. So you have to keep, so which simply means कि level 4 या level 3 या level 2 पे ड्रेस करने से हम वो मैसेज नहीं कम्युनिकेट करने लगते. बहुत सारी और चीजें होती हैं. हम क्या बैग कैरी कर रहे हैं, कौन से शूज, so many things that add to our image, and we'll discuss them. So I'll move forward now. Sorry. What should be the design details on your ties? हमने length discuss की. These are some design details. So these are image makers: diagonal stripes, straight stripes, solid ties. These are breakers. Don't wear these kind of ties to work. They'll just give a very wrong message or miscommunication, and people might interpret you wrongly, and we don't want that. The length of a trouser for men, this rule is only for men, not for women. Women's length of the trouser should be as per their height and body shape. For men, however, there's a standard length, and remember for that, the length of your trouser should finish, ये जो आपके शू का बैक है ना, उसके एकदम सेंटर एंड होना चाहिए. You see this here? That is the correct length of a trouser. These are image makers. ये pleated pants है जो आपको पहनता नहीं है, but if you have a very wide waist, like I said, वो pants की pleats उस width को adjust कर लेते हैं. But most people wear this, a classic fit, the flat fronts, and this is your slim fits, which is in trend right now. Makes you look very sharp. So if you have a nice balanced body, you can go ahead with the slim fits. Image breakers, totally. Distressed jeans, cargos, chinos, shiny pants, denims, very tight fitted jeggings or treggings as they call it. Ye treggings hai, by the way. Trouser and leggings, treggings, all are image breakers. Don't wear them to work, please. What should be the color of your socks? जब मैं ये सवाल ज़्यादातर लोगों से पूछती हूँ तो बहुत लोग मुझे जवाब में बोलते हैं white या black या grey. There is no standard color of socks that you can have. The color of your socks should be exactly same as the color of your trouser, as closely as possible. Mid to over the calf length, smooth, very small pattern. White athletic socks are only for non-business. वो इसलिए है कि अगर आप ऐसे सॉक्स पहनते हैं, इन्हें हम हैप्पी सॉक्स बोलते हैं, जो ट्राउजर से मैच नहीं करते. कंपेयर देम विद दीस फॉर्मल सॉक्स. अगर आप ऐसे सॉक्स पहनते हैं, ये इमेज ब्रेकर्स हैं. क्यों? बिकॉज ये सॉक्स बहुत अटेंशन कैच करते हैं. तो बिजनेस में वी डोंट वांट पीपल टॉकिंग टू आवर शूज और आवर सॉक्स. These will catch attention, and they people will not look at your face at all.
We want people to look at us, and this will not even get noticed. So please try and match the color of your socks as closely as possible to the color of your trouser. These happy socks, as they are called, can be worn for personal and social occasions. The color of the shoe, preferably brown shoes with beige, off-white, brown suits, trousers, and black shoes with navy blue, gray, charcoal, those kind of suits. These are your image makers. Leather shoes, preferably lace-ups, are the most formal. Slide-ons भी होते हैं, but ये shape बड़ा ही image breaker है. Don't wear this shape. All of these are image breakers with your formal clothes. Watches, leather straps, metal straps. Don't try and wear those very chunky sports watches. They catch a lot of attention. In your glasses, metal rim, what I'm wearing, or this tortoise shell, or a rimless. These are classics. आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पहनिए, they'll never go out of fashion. They'll always very formal. A belt, remember the belt should be as close in color as possible to your shoe. इसलिए जब आप अपना बेल्ट खरीदने जाते हैं, जिस शू के साथ उसे पहनने वाले हैं वो शू लेकर जाइए और कलर मैच करने की कोशिश करिए. यहाँ शू लेने जाते हैं, डू दैट विद योर बेल्ट. अदरवाइज आपका फेस, आपकी बेल्ट, आपका शू, जो आदमी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा उनकी तरह हम 3 फोकल पॉइंट्स क्रिएट कर देंगे अपने आउटफिट में और लोग ऊपर नीचे देखते रहेंगे. योर मैसेज विल गेट लॉस्ट. Bags, make sure that an adult professional male carries a bag in his hand, not on his shoulder. With school, when you graduate from school, your bag has to graduate also. If you are a guy who travels on the bike, a bag like this will work very well. On the bike, you put it on your shoulder, but when you enter your office with work, the bag is in your hand. These are image breakers, totally. These are shoes for women. There are so many varieties. मैं सबके pictures नहीं रख सकती थी, but these tend to be the most favorite because they are flat and your job requires a lot of running around, meeting with people. So this looks formal as well as extremely comfortable. But all of these shoes are very formal. The more closed a shoe is, the more formal it is. These are image breakers. Totally. Handbags for women, image makers. All structured, no too much design and all that. These are breakers. And there's so many other breakers I know you can think of. Earrings or accessories, the smaller, the better for work because we don't want your accessories catching attention. So these are image makers. Apart from everything that we discussed, level 3, the color guidelines, everything, ये discussion incomplete है अगर मैं fit की बात यहाँ ना करूँ. Which means आप लेवल 2 पे ड्रेस्ड हो, डार्क डल कलर्स पहने हो, बेस्ट ब्रांड पहना हो, बहुत ही महंगा सूट पहना हो, लेकिन अगर उस सूट का फिट सही नहीं या अगर उस कुर्ते की फिट सही नहीं, या तो वो बहुत ढीला है या तो वो बहुत टाइट है, that will spoil everything. So the fit is as important an ingredient in your overall outfit as everything else. And to stress my point, you see how this shirt fits this man here and how sharp he looks in this particular outfit compared to this one. So fit is key to your outfit. कोई भी आउटफिट आप जब कोई भी गारमेंट खरीदने जाते हैं, अगर वो आपको बढ़िया से फिट नहीं होता है तो प्लीज उससे मत खरीदो कि अब 2 किलो कम हो जाएंगे तो बढ़िया से आ जाएगा या 2 किलो बढ़ जाएंगे, बढ़ने वाले हैं और फिटिंग अच्छी हो जाएगी. ऐसा कोई भी गारमेंट आप, आई वुड नॉट recommend you buy clothes that fit you well at that point of time. If I were to ask you, this is the same man, both are dressed at level 3. It's the same person who looks more formal, sharp, professional, credible and capable in the picture on the right hand side. Why? Yes, Akansh, hairstyle matters a lot. So your hairstyle has to be in place and it should not be distracting. If you notice, the hairstyle also in the same picture is changing the look of the guy. What are the other things that make him look more credible, capable and sharp in the picture on the right? If you could put your response. The bag, very good, very good. His bag, the length of the trouser, excellent. You see how carrying a bag, the tie, yes. Mr. Srinivas says the tie, absolutely, I agree. And if you notice, the bag on the shoulder makes him look like somebody who has low experience or who's going to do a day job. And this looks like an officer. So please
The beard, absolutely. Hairstyle, fantastic. Yes, Akansh, it's the hairstyle also that makes so much of difference. So look at the fit of the trouser, the shoe, the way he's carrying the bag. ये पिक्चर मैंने यहाँ इसलिए रखी है कि मैं आपको ये बता सकूं कि सिर्फ लेवल 1, सिर्फ लेवल 2, 3 या 4 पे ड्रेस होने से कुछ नहीं होता। ये मैन लेवल 3 पे ड्रेस्ड है, पर आपका बैग कैसा है, उसे आपने कैसे कैरी किया है, आपके क्या शूज हैं, क्लोथ्स हैं, हेयर स्टाइल, ग्रूमिंग, हर छोटी-छोटी चीज़ मिलके एक पावरफुल इमेज क्रिएट करती है। द बटन्स, ब्रिलियंट। दिस वाज़ Anudeep. Very good observation. Look at the way his buttons are opening up here. That's a very tight shirt. So the fit of the shirt, the fit of the garment also is so important to observe. This man is wearing the exact same clothes, but सिर्फ उसका fit बदल दिया है और वो यहाँ पे ज़्यादा young, ज़्यादा sharp लग रहा है। The same thing here. Here he is wearing half a size smaller. ये ब्लैकबेरीज का सूट है और ये सूट सिर्फ आधा साइज छोटा है, but he's looking so much sharper and smarter in this outfit rather than this one. और ये garment के fit का power. Therefore, please pay a lot of attention to the fit of the garment. Both these men you see on the screen are dressed on level 2. But आप फर्क देखिए, इसलिए सिर्फ एक शर्ट और ट्राउजर पहन लेने से हम सीरियस नहीं लगने लगते। वो आयरन है कि नहीं है, वो कलर का कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं है, टाई के साथ कलर कोऑर्डिनेटेड सही है कि नहीं है, वो आपको फिट सही से करता है कि नहीं, बेल्ट और शू का कॉम्बिनेशन कैसा है, ये छोटी-छोटी चीजें मिल के आपका इमेज क्रिएट करती हैं। आई एम सॉरी। इसलिए जो don't focus on what you're wearing, but how you're wearing also is very important. So to sum up for my clothes, the power of clothes. Wrinkled clothes communicate a careless attitude. If you want to look organized, the best way to look organized is to iron your clothes. That's the easiest thing to do. So iron your clothes and wear, otherwise you look careless. Bright colors communicate fun, lively and young. इसीलिए ब्राइट कलर्स आपके आउटफिट में बहुत थोड़े क्वांटिटी में होने चाहिए, बिकॉज यू वांट टू कम्युनिकेट डोमिनेंटली सीरियसनेस। एक्सपेंसिव, कभी बहुत बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े मोबला की पेन या लॉन्जीन्स की वॉच sometimes may make you look like a show off. So be very careful and mindful as a junior or as a young intern or as a young officer to wear very expensive brands. बैडली फिटिंग क्लोथ्स, जैसे हमने लास्ट 2 पिक्चर्स में देखा, बहुत ढीले ढाले कपड़े या बहुत टाइट कपड़े, दे मेक यू लुक लाइक समबडी विथ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, विथ सेल्फ डाउट. So and I'm sure that doesn't work for any profession, so be very wary of that. A suit always communicates business. I'm here to do business, and by business I mean work, serious work. So eventually gear up yourself to get comfortable in a suit. A well-fitted, well-ironed, clean attire communicates a capable, dependable, powerful person. And small things together make uh, make your image. These are some pictures I put of our leaders today who pay so much importance to what they wear. And Sonia Gandhi's always looked as a very, her image physically has always been a very sharp person. If you look at what she's wearing, very formal. And Kiran Bedi, the sleeveless jacket, if you notice, that I think always contributed. कितने उनका attire आप देखो, it always contributed to that iron lady image that she carried in her heydays as a police officer. So just to sum up what we discussed in clothes, if I were to ask you, what level will you dress on when you are lounging in your hostel at the academy? What will your answer be? What level should you dress on? At the lounge in your hostel. 1. Fantastic. So that's level 1 or level 2 for people who feel comfortable in level 2, a t-shirt with a collar. What level will you dress on in the mess when you go for your meals? 2. Thank you. Absolutely. Because जब आप मेस के लिए जाते हैं तो आप 10 लोगों से बीच में रास्ते में मिलते हैं, मेस में जो स्टाफ आपको सर्व कर रहा है वो आपको देख रहा है, आप क्या चाहते हैं कि वो आपको एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह देखे और ट्रीट करे, या एक यंग ऑफिसर जो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो एक रेलवे डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनने वाला है उसकी तरह देखे. सो लेवल 2 इज द राइट आंसर. थैंक यू. व्हाट अबाउट द स्पोर्ट्स ग्राउंड?
One, absolutely. So the place Arena Sports is a very relaxed and fun place. Anywhere else in the academy? Two, fantastic. Two और थ्री, जिन लोगों को ड्रेसअप करना पसंद होता है, ऐसे बहुत लोग होते हैं who like to dress up. They can dress at level 3 also. Absolutely. 2 and 3. Yes, yes, Mr. Ram. What about as an office bearer when you take the office? 4, 3 and 4. Absolutely. So for the ones who are very comfortable wearing a math suit, even level 4 works for them. Meeting a constitutional authority. 4, preferably 4. Yes, I would say that. Meeting with a corporate. I'm sure you all meet with corporates also. 4, yes, because they take their attire very seriously. So 3 and 4 both works, but I'm so glad so many people are saying 4. What about a site visit? 2. So 2 and 3, and preferably level 2 with either a Nehru jacket or a tie will just add to your presence. Absolutely. What about a formal presentation when you are giving a formal presentation? 4, thank you. 3 और प्रेफरेबली 4, बट कोशिश करके जब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना तब आप 4 दीजिए, क्योंकि लेवल 4 पे रहिए, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं ना वो 15-20 मिनट के लिए यू ओन द रूम. For those 15 minutes of presentation, you're the boss. You speak and everybody listens to you. So when your appearance is in sync with that job, that role of the presenter that you're paying, it just adds more punch to your presentation. So 4 and 3, yes, I agree, totally. I'll now quickly move on to our next module. Thank you so much for the engagement in the exercises. I hope it continues for the etiquette module also. If you still have any questions, you can email them to me or still put them in the chat box. If I can, I'll take them. Okay, now we keep hearing this word very often, the word etiquette. और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये रूल्स फालतू में हम पे थोप दिए गए हैं, इन्हें इन्हें दूसरे लोगों को टॉर्चर करने के लिए लिखा गया है एंड ऑल अबाउट दैट. But honestly, all etiquette is about being comfortable around people and making people comfortable around you. जब लोग आपके आसपास होते हैं, वो कितना रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करते हैं और आप कितने रिलैक्स्ड हो साइकोलॉजिकली इन बिटवीन अदर पीपल, ये है एटिकेट. एटिकेट इज ऑल अबाउट टू थिंग्स. इट्स अबाउट रिस्पेक्ट एंड इट्स अबाउट कॉमन सेंस. हर सिचुएशन में अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, थिंक अबाउट व्हाट इज द रिस्पेक्टफुल थिंग टू डू, व्हाट इज द कॉमन सेंसिबल थिंग टू डू. बहुत लोग एटिकेट को मैनर्स से कंफ्यूज कर देते हैं. सो आई टेल यू व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड मैनर्स एंड एटिकेट इज. मैनर्स है जहां सही और गलत का सवाल आ जाता है. मतलब अगर कोई बड़ी उम्र के इंसान आपके साथ बस में खड़े हैं और आप बैठे हैं, तो खड़े होकर उनको सीट ऑफर करना. कोई जो देख नहीं सकते वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको रोड क्रॉस करवा देना. या कोई प्रेग्नेंट लेडी कोई ग्रोसरी स्टोर से वजन उठाकर निकल रही है तो उससे वो वजन लेके उसकी मदद करना, ऑफर करना, ये गुड मैनर्स. इट्स अबाउट व्हाट इज द मॉरली द राइट थिंग टू डू. दोज आर मैनर्स. एटिकेट हाउएवर आर रूल्स रिटन बाय पीपल लाइक यू एंड मी. इसमें ज्यादातर सही और गलत से ज्यादा इस बात पे तवज्जो दी जाती है कि जब 10 लोग साथ में बैठ के कोई काम करते हैं तो उन्हें क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए जिससे सब कंफर्टेबल रहे. तो अगर 10 लोग एक बाथरूम यूज करते हैं, आपका एकेडमी का हॉस्टल का एक कॉमन बाथरूम है फॉर एग्जांपल, या मेस का एक कॉमन वॉश बेसिन है फॉर एग्जांपल, उसे 100 लोग 150 लोग यूज करते हैं. तो अगर कुछ रूल्स लिख दिए जाए कि आपने सोप जहां से उठाया वहीं रख दीजिए, टिश्यू पेपर हाथ पोंछकर डस्टबिन में डालिए, यहाँ वहां मत फेंकिए, इन रूल्स को जब सब फॉलो करने लगते हैं तो इतने सारे लोगों का वो फैसिलिटी यूज करना जरा सा आसान हो जाता है. इसमें सही और गलत की बात नहीं है. मतलब अगर आप टेबल पे बैठे हैं और स्पेगेटी सर्व कर दी और स्पेगेटी को हम फोक से खाते हैं, अगर कोई हाथ से स्पेगेटी खाने लग जाता है तो इसमें मॉरली कोई गलत चीज नहीं है, बट एटिकेट वाइज वो गलत है. क्योंकि हो सकता है कि उसके पास बैठा कोई इंसान ऐसा हो जिसे वो स्पेगेटी हाथ से खाते देख रहा हो और वो स्पेगेटी पूरी गिर रही हो आजू बाजू, उससे उसको अनकंफर्टेबल लग रहा हो. यू शुड नॉट मेक पीपल अनकंफर्टेबल अराउंड यू. दैट इज एटिकेट. ये एक छोटी चीज अगर आप दिमाग में रखेंगे कि हाउ टू मेक पीपल कंफर्टेबल अराउंड यू. एंड ट्रस्ट मी, there's a quote, very famous quote, and I believe in it. Clarence Thomas का ये quote है कि etiquette and manners can open doors that the best of education cannot.
जो जिस इंसान के मैनर्स और बिहेवियर बहुत अच्छा और रिस्पेक्टफुल होता है ना, उसे आगे बढ़ने में लाइफ में कोई रोक नहीं सकता. Nobody can stop that person from going ahead in life. So in your professional career, one of the things that will matter most in making you a popular officer will be how you conduct yourself, will be your behavior, will be your understanding of etiquette and manners. So we'll move ahead. Etiquette still opens doors. Life is more pleasurable and easy when you know what to expect from others, what they expect from you, and how to respond in an appropriate way. ये चार चीजें मैंने आज एटिकेट इतना वास्ट टॉपिक है दैट with the time constraint in hand, these are some four things that I thought you would benefit from, and I've put them in my module or in my session for you. But defining business etiquette in a more formal way, business etiquette is putting those soft skills which provide us with confidence to handle people and situations with tact, diplomacy, and respect in a business environment. So it goes a long way with you. Your bearing, manners, and behavior in any business situation largely determines your success or failure. ये मैं जितनी बार कहूँ उतना कम है. मैंने एचआर डिपार्टमेंट में 7 साल सिर्फ रिक्रूटमेंट में निकाले हैं, एंड आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि जिन लोगों का बिहेवियर और उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटिकेट सही रहा है ना, वो ऐसे ही चलते गए हैं. They've never stopped. They've just continued to move ahead. So let's do a fun quiz. It'll again engage all of us. I'm going to ask you a question and you share your response in the chat box. Let's say in a business arena, what do you think? Only men should stand for handshaking in all introductions. Only women should stand for handshaking in all introductions. It is not necessary for men or women both. And both men and women should stand for handshaking in all introductions. What do you think is the answer? D, absolutely. That's wonderful. Yes, yes, it's D. Question number 2. For easy reading, जब हम कोई कॉन्फ्रेंस जाते हैं या हम कोई सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं जहाँ पे हमें आईडी कार्ड्स दिए जाते हैं, फॉर इजी रीडिंग, one's name badge should be on the left shoulder, on the right shoulder, on the left hip, or around one's neck. A lot of people are saying A. Okay, the right answer, however, is B. आप देखेंगे आर्मी और पुलिस फोर्स हमेशा अपना नाम राइट शोल्डर पे पहनते हैं, और आपको भी कॉन्फ्रेंसेस में या कहीं भी वो बैज यहाँ पहनना चाहिए unless it's something that you wear in the neck, because when you shake hands with people, the line of sight of an individual moves from the arm towards the right shoulder. So here somewhere on the upper right chest or the right shoulder is where you should wear your name badge. When you meet people at a business or a social function, the right thing, sorry, oh, oops. Okay, I gave the answer, so by mistake. So when you go in a social function, you should introduce yourself to a person standing alone, not go to 2 people standing in a corner, or stick close to those you know very well. Okay, when 2 business people communicate, how far do you think they should stand? A, B, or C? 1.5 feet, 3 feet, or 7 feet? It's B. You're right. The right answer is B. This is also called the business distance. दो लोगों के बीच में एक बिजनेस एनवायरनमेंट में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम 2.5 फीट से तो ज्यादा होना ही चाहिए. So otherwise you are entering the personal space of a person, which might make him or her feel very uncomfortable. During business introductions, when you're introducing 2 people, should you wing it? जाने दो, जरूरत ही नहीं इंट्रोडक्शन करने की. Introduce the less important junior person to the more important senior person. Introduce the more important senior person to the less important junior person, or don't do anything. It's their responsibility to introduce each other. The answer is actually B. Introduce the less important person to the more important person, and I'll tell you how. We'll discuss business introductions in detail. When you're dining with someone important and your cell phone rings, should you answer it within 2 rings and keep the call very brief? Ignore it and pretend someone else's phone is ringing? Apologize and turn the phone on silent mode? The person you're with takes priority.
Apologize, step away from the table and take the call in the lobby or restroom. Okay, yeah. So the correct answer would be C, apologize. But if it's a very important call, I think that's the reason a lot of people have also said D. But अगर आप किसी important person के साथ dine कर रहे हैं ना, that's the question. When you are dining with someone important, अगर आपके बॉस हैं या कोई डिग्नेटरी है, कोई फॉरेन डेलीगेट है, तो आंसर सी होना चाहिए. और अगर आप कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कॉल आप अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एडवांस कि मेरा टेबल पे फोन इसीलिए रखा है बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल एंड आई कैन अफोर्ड टू मिस इट, सो आई विल बी टेकिंग दैट कॉल. So you inform that person in advance. Otherwise, try and keep your phones off the table totally. When exiting an elevator and a more senior person is toward the back, always step aside to let the more important person exit first. Exit first if you're closest to the door. A or B? No, the right answer here is B. एलिवेटर एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप किसी का वेट नहीं कर सकते, बिकॉज एलिवेटर में सब इतना पास पास क्रैम्ड खड़े होते हैं एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को इन्वेड करके दैट एवरीबडी वांट्स टू गेट आउट फास्ट. You cannot stop in front of the exit and block the traffic in moving out from the elevator. If a boss is with you and he's standing at the back, you exit the elevator and you wait for him outside. Let him walk out and then you follow his lead. But in an elevator, that's the only place where you exit first if you're closer to the exit. So when it comes to reaching a door, when you arrive at the same time as other people, the following rules apply. Whoever arrives first should open it and hold it for those who are following. Men should always open doors for women. Women should open doors for men to prove they are no longer oppressed, or always open the door for someone of either gender if that person has his or her hands full. तो कुछ लोग A बोल रहे हैं और कुछ D बोल रहे हैं, and the correct answer is A and D both. Absolutely. जो पहले पहुंचे वो दरवाजा खोल के बाकी सबके लिए डोर होल्ड करे, that's a very good thing to do. जो उसके बाद एंटर होगा, they will feel grateful to you even if they don't. Good manners are also putting up with other people's bad manners. दूसरे लोगों के बुरे मैनर्स को बर्दाश्त करना भी गुड मैनर्स होता है. तो आप ऐसा कभी मत सोचिए कि ये तो कोई मैनर्स फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं. No, good manners are also putting up with other people's bad manners. Absolutely. Just give me a second. When expressing thanks to someone who has given you a gift, what should you do? Send an email because it is faster and more efficient. Send a handwritten note within 48 hours. Pick up the phone call for within 72 hours, and consider a verbal thank you enough. Okay, nobody has said B so far. The correct answer is actually B. So sending a handwritten note within 48 hours is considered to be the most polite way of thanking somebody for a gift. But अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, तो don't send an email or a WhatsApp message. At least call that person within 48 hours and verbally thank, because जो gratitude आप अपनी tone से express कर पाएंगे, अपने note के through express कर पाएंगे, वो email या message के through नहीं. Now, what is the importance of business etiquette? Remember, it is the best way to improve your people's skills, and business etiquette isn't meant to be strictly formal. It's really about being kind, it's about being considerate, empathetic, and respectful towards people. So let's see how a good handshake should be. Remember, handshakes are not half. बहुत सारे लोग आधा आधा हाथ सिर्फ अपनी फिंगर्स ऑफर करते हैं. I see women do that more than men. But a lot of men also who feel uncomfortable, they just give their fingers. A proper business handshake is a web to web. So you offer your hand like this with your thumb perpendicular to the hand, and you hold with a proper web to web and a handshake. That's a good handshake. So you make eye contact when you offer your hand to shake. Your forearm should be parallel to the body. इसका मतलब जब आप handshake करते हैं, it's a movement of the elbow,
not a movement of the shoulder. आपको shoulder नहीं elbow हिलाना है. आपका forearm should be parallel to the body. Your hands should be clean and dry. Two, 3 pumps, just like you see. Just 2 pumps and that's it. There, that's it. 5-10 बार हिलाते रहना है. That's it. And give that beautiful smile. So that's like a perfect handshake. A good handshake communicates a reliable person, a very confident person, a person who's aware of etiquette, and helps you create a good first impression. Now we'll talk about self-introduction and introductions in groups. If you are ever giving a self-introduction and offering the hand to shake at the same time, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर हमें आदत नहीं होती है हैंडशेक करने की, हम अपना हाथ देते हैं और इंट्रोडक्शन बोलना शुरू करते हैं, हाथ वापस लेना भूल जाते हैं. And that hand keeps shaking and that becomes embarrassing. So remember next time when you're introducing yourself and shaking the hand at the same time, you shake hands and say your greeting. Good morning, good evening, और हाथ पीछे ले लिए. I am so and so, or my name is Diya Khurana. I'm an image etiquette and wardrobe consultant and blah blah blah. And you can give your introduction. I'll share some tips here and carry on. But here I would like to make one note that junior officers or people junior in the hierarchy should avoid initiating a handshake to their seniors. It is a privilege and right reserved for the seniors and for people in the up in the hierarchy to initiate the handshake with you. Okay. So let's look at some rules for self-introduction. So you stand tall, you smile, maintain eye contact, extend your hand for a firm handshake, state your full name and designation. I am Diya Khurana. Myself Diya Khurana galat tarika hai introduce karne ka. You never say myself or me. You say I am, my name is. These are two ways you can introduce yourself, and always state your full name and your designation. Try and repeat your name if you feel कि सामने वाले को आपका नेम यहाँ शायद सुनाई नहीं दिया या उन्हें समझ नहीं आया. Repeat your name, and different cultures have different pronunciations for names. So the more clearly you pronounce your name, the more clearly the other person will hear it, and the more properly he will pronounce your name. So clearly spell out loud enough for the person to hear it. Offer the handshake and say a nice greeting of good morning or whatever. A namaste is also a very good way of greeting. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ancestors were so smart. I mean, it's a more hygienic and I think probably a more respectful way of greeting people. And I'm sure in the department, a very acceptable way of greeting each other also. So if you feel comfortable saying namaste to people, go ahead. I still do that to a lot of my senior, people, clients I work with. जो senior level पे बहुत होते हैं, senior HR officers, HR managers, heads. उनको मैं जाके बहुत कंफर्टेबली नमस्ते बोलती हूँ. पीपल आई फील हु आर अनकंफर्टेबल शेकिंग हैंड्स विद मी. और इंडिया में हमारी इतनी डाइवर्स कम्युनिटीज और कल्चर्स हैं कि हो सकता है कुछ लोग ऑपोजिट जेंडर के आपके साथ हैंडशेक करने में अनकंफर्टेबल फील करें. तो अगर आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगता है कि दे माइट बी फीलिंग अनकंफर्टेबल इन शेकिंग हैंड्स विद यू, then don't offer a hand to shake and simply say namaste. It's as beautiful a greeting I feel as a handshake or a good morning is. But when you are introducing two people, अगर आप अपने आप को नहीं दो अलग लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तब हायरार्की दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. Otherwise, you might end up hurting anybody's feelings or you might end up sounding disrespectful. तो जब हम ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, ये हमेशा याद रखिए, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द पर्सन ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस और द अथॉरिटी फर्स्ट. आपके डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कॉर्पोरेट्स की तरह एक हायरार्की होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है. तो द सीनियर पर्सन इन दिस केस बिकम्स द हायर अथॉरिटी और द ग्रेटर अथॉरिटी. यहाँ जेंडर और एज इतना मैटर यहाँ बिल्कुल मैटर नहीं करता. इंट्रोडक्शंस में हायरार्की मैटर करती है. You with me? So how do you maintain the hierarchy or authority? Always take the name of the higher authority first. तो अगर आप किसी सीनियर ऑफिशियल को जूनियर ऑफिशियल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बोलेंगे मिस्टर सीनियर, दिस इज मिस्टर जूनियर, या मिस्टर प्रेसिडेंट, दिस इज मिस्टर सो एंड सो,
और मे आई इंट्रोड्यूस टू यू मिस्टर सो एंड सो। तो याद रखिएगा, ग्रुप इंट्रोडक्शंस में हमेशा हायर अथॉरिटी को हम लोअर अथॉरिटी को हम हायर से इंट्रोड्यूस करते हैं, और नाम हमेशा यू टेक द नेम ऑफ द हायर अथॉरिटी फर्स्ट ऑलवेज। सो इन योर हेड इफ यू आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस टू पीपल, पहले ये सोच लीजिए कि सीनियर कौन है, तो सीनियर का नाम लीजिए और फिर उससे दिस इज और मे आई इंट्रोड्यूस टू यू द जूनियर पर्सन। Then is your business card. It's not called a visiting card anymore. Don't call it a business card. In the new lingo, it's called a business card. It's a card that has all your details on it. So make sure you have one. Make sure it's in good shape and it's readily available. Now, how do you present it? So, consider your business card as your most important advertising tool. There were so many people who wanted to reach the stage you have reached, but only you all were able to reach it. And your business card with your designation is saying कि मैं इतने सारे लोगों के बीच में इस पोजीशन पे आके इतने सालों में पहुंची। It's your most powerful dominant advertising tool. So your business card shares your contact information, it establishes credibility, and it also demonstrates a lot of professionalism. Use a business card holder always. Don't stuff your business card in your wallets, because wallet में उसका shape बिगड़ जाता है। Always carry a good number of cards, be prepared all the times, prioritize readability over creativity. अगर आपका कार्ड बहुत हाई फंडू है, बहुत ही क्रिएटिव है या फैशनेबल है, पर उसमें आपका नाम पढ़ने में तकलीफ हो रही है, इट्स नॉट अ गुड बिजनेस कार्ड। उसका फंक्शनल पर्पस लूज नहीं होना चाहिए। Keep the information updated. When you meet someone for the first time, it's okay to request for a business card. May I have your business card, please? और आपको कभी भी किसी से business card मांगना हो तो उसे request कीजिए, May I have? अगर आप किसी सीनियर ऑफिसर का बिजनेस कार्ड चाहते हैं तो उसे मांगने की जगह एक बेटर तरीका है आप अपना कार्ड ऑफर करें। सर, मे आई ऑफर माय बिजनेस कार्ड, और उसके रिटर्न में अगर वो आपको देना चाहते हैं तो वो आपको देंगे। अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो डोंट पुश इट। इट्स कंसिडर्ड रूड फॉर अ जूनियर टू पुश for a contact information from a senior. Also, when you take a business card, always ask how these people would like to be contacted. Can I send you a WhatsApp message, or would you prefer to receive an email? Or is it okay if I give you a call? Always make sure that you establish what kind of contact can be made to this individual. However, if the person, like I said, is of higher position, wait for them to offer their card to you. Treat the business card as the one you receive as you would like your card to be treated. So, which means treat it with a lot of respect when you receive somebody's card. As a crumpled card creates a very bad impression, so make sure you carry it in a holder where the shape of the card is maintained. And अगर आपकी कोई भी information change होती है, जैसे for example your mobile number is changed, your address is changed, don't cut it with a pen and rewrite something. That just kind of doesn't work. Invest some 1,000 rupees in it and get your business card reprinted. The right way of offering your business card ideally is with both the hands like that. ये देख रहे हैं आप? यहाँ आप अपने राइट हैंड से पकड़ के ऑफर कीजिए अपना कार्ड, या अपने दोनों हाथ से, और ये कार्ड इस तरह पकड़िए कि आपका नेम या लोगो कवर ना हो, और जो राइट वे है, जो रीडिंग साइड है, वो आपके रिसीवर की तरफ होना चाहिए, सो दैट ये रिसीवर जब ये कार्ड रिसीव करे तो उसको कार्ड को घुमाना ना पड़े पढ़ने के लिए। इट्स ऑफर टू हिम द राइट वे, तो वो ले एंड ही कैन रीड इट इमीडिएटली। होल्ड इट बाय इट्स एज, and when you receive someone else's card, when somebody else gives you, when you are the receiver, make sure you look at the card and make a positive comment about it. So, अच्छा ये आपका logo है, oh that's your surname, this is where your office is, that's a beautiful font, anything. It simply shows that you are interested in the person and you're showing interest in his card. And ask, like I said, how they prefer to be contacted. It's very important. It shows how much. और अगर उन्होंने बोला है मुझे कॉल मत करिए तो प्लीज कॉल मत करिए. That is something that speaks volumes about your character and you as a person. If you receive a business card, however, before a meeting on the table, leave it on the table till the meeting is over. अगर आपको 10-15 मिले तो उसे कैसे रो में लगा के टेबल पे रख लीजिए. And when the meeting is over, pick it up and put it into your pocket. That's how you offer the card. Hold it with both your hands or with your right hand. And the right way should be towards the
receiver. Now is meeting etiquette. I'm sure आप बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो हमें पता है, but very often कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हम मीटिंग्स के टाइम भूल जाते हैं. तो जो मेरे माइंड में मुझे इम्पोर्टेंट लगी, I've just bulleted them, jotted them down here for you to read. So every day is made of meetings and meetings. If you're going to a meeting where there are a lot of people who don't know you, after the meeting is settled and people are asked to introduce themselves, please stand up. Never give your introduction sitting down unless the boss or the senior tells you कि यार बैठ जाओ, बैठे-बैठे introduce करो, कोई problem नहीं. Unless that has not happened, stand up. Let people associate that name and introduction with a face. हो सकता है कोई कोने में बैठा हो जो आपका face नहीं देख सकता. So stand up, smile, make eye contact with the people in the room, shake hands if you're introducing yourself at that time, speak clearly and introduce yourself. और अपना इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो बहुत कॉन्फिडेंटली आपके मुंह से फ्लो होना चाहिए. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू राइट डाउन एन इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड यू प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एज एन इमेज कंसल्टेंट, तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलती थी जिन्हें ये भी नहीं पता था कि इमेज कंसल्टिंग क्या होता है, एंड आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू देम. तो मैं रोज रात को अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज करती थी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ दैट डे. And I used to practice it in front of the mirror, and that helped me so much. So write a good introduction about yourself and practice it. It will help you a lot. Remember the names of the people and use first names only if you have permission. So if you're talking to people, you call someone Dia only if you have the permission to call that person Dia. Or you say Miss Khurana or Miss Dia. So in business parlance these days, there are only standard the abbreviations that we give to people. For men, it is Mr. and for women, it is Miss. There is no Mrs. or Miss anymore. It's just MS, Miss. That's it. Before a meeting, be punctual. I know that speaks volumes about us. Dress appropriately. अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं जहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा डिस्कस हो रहा है और बहुत सारे सीनियर्स बैठे हैं, एंड यू आर ड्रेस्ड वेरी कैजुअली, इट सिंपली मीन्स कि आपने इस मीटिंग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा कि आप उसके लिए ड्रेसअप हो गए. When you dress up for an occasion, it shows your respect and your importance, the importance of that occasion in your mind. Therefore, dressing appropriately is very good etiquette for any place. आप अगर किसी की शादी में जीन्स और सैंडल्स और टी शर्ट पहन चले जाएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे घर की शादी इसके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं थी कि ये ड्रेसअप होकर है. इट्स अ मैटर ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट. Bring the required material, of course. If you're holding the presentation, make sure everything is sorted. If there's an established seating pattern, accept it. If you're the junior most person in the room, which you might be for the next 1 or 2 years, wait for all the seniors and elders, dignitaries to sit down. And then take the vacant chairs. जो seats बच जाती है ना, उन पे आप बैठ जाइए. Till then, wait for everybody to settle down. Dining table पे भी यही करिए. Wait for everybody to sit down. If you're dining with a big group, wait for everybody to sit down. Put phones and all other devices on silent mode. That just goes without saying. Stay calm, don't fidget. Pen से या किसी भी और चीज से. Don't make and receive calls, of course, absolutely. If unavoidable, excuse yourself. Attend the entire meeting unless it is necessary to miss it. And in discussions, very importantly, allow senior people to contribute first. So if the guy who's presenting has thrown an idea and say, अब आपका इसके बारे में क्या feedback है? Allow the seniors or the bosses sitting in the room to share their view first. It will always benefit you more, even otherwise, to be the last speaker in the room. And be brief. When speaking, make sure what you say is relevant and at an appropriate pace. Speak clearly, not loud. तो अगर आप एक सवाल पूछ रहे हैं, अपनी आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मेक इट शॉर्ट एंड कंसाइज. लंबी रामायण या गाथा सुनना किसी को भी पसंद नहीं. Be as concise as possible. If you have a question to ask, raise your hand and wait for the presenter to come to you. Okay, Diya, now you speak up. After the meeting, of course, complete the task assigned, circulate the minutes of the meeting, and get feedback.
Now I will be moving on to another module of etiquette. Till now we were doing business etiquette and office etiquette. What I'm going to be talking about is a concise module on dining etiquette. And like I said, if you have any question, put it up in the chat box. I'll take it if I can. If not, I'll respond back to you in my email. So even on the dining table, like I said, on the meeting table, just like on the dining table, the head of the table is always reserved for either the host who has initiated and invited everyone, or is reserved for the boss, for the senior most person of the group. So if you are a guest or the junior most person in the entire group, please do not sit on the head of the table. Host guides their guests to take a seat. If you're a junior, wait for everybody to sit down. Guests should never sit on the head of the table. Your sitting posture, keep 2 fists distance from the table. Always. That will help you sit straight and maintain a good distance between the table and your body. Elbows must always be off the table. The simple reason is that if everybody keeps the elbows on the table like that, we'll be nudging each other, and that will make dining very difficult with other people. So therefore, we always request people to keep their elbows off the edge. So you keep your elbow, this part should rest on the edge of the table. Keep away phones, bags, and other accessories. If you're a lady and you're carrying a bag, your bag must either be kept on the back here behind you, or it should be hanging on the arm of the chair. Now I'm going to briefly discuss the table layout, how the table is laid out on the, how the plates and cutlery is laid out on the table. You will find that any restaurant that you go to, some restaurants might have 3 forks instead of 2, some might have 2 spoons. अलग-अलग restaurants अपने table का layout अलग रखते हैं. So what I'm going to do is I'm going to share 2 rules of table layout with you today. If you understand those 2 rules, और रिमेंबर दोस 2 रूल्स, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, आपको टेबल का लेआउट देख के समझ में आ जाएगा कि कितने कोर्सेज फूड सर्व होने वाले, हाउ मेनी कोर्सेज, क्योंकि आजकल रेस्टोरेंट्स में फूड कोर्सेज में आता है. सो इफ यू नोटिस, वी हैव अ ब्रेड प्लेट हियर, अ बटर नाइफ. यही ब्रेड प्लेट यहाँ नीचे शिफ्ट होकर इंडियन रेस्टोरेंट्स में यहाँ आ गई है, जहां हम अपनी ब्रेड रखते हैं, which is naan, paratha, roti, kulcha, whatever. So that's a bread plate, that's a dinner plate, a salad fork, a dinner fork, dinner knife, spoon, and soup spoon. These are the glasses, these are the dessert cutlery. So the rule number 1 to remember for a table layout is BMW, which means bread, meal, water rule. विच सिंपली मीन्स कि जहां भी आप बैठे हैं, अगर आप 2 लोगों के बीच में बैठे हैं, द प्लेट राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज योर डिनर प्लेट, योर मेन कोर्स प्लेट, ये मील. द स्मॉल प्लेट ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अगर आप 2 लोगों के बीच में बैठे हैं तो एक क्वार्टर प्लेट आपके लेफ्ट पे होगी और एक क्वार्टर प्लेट आपके राइट पे होगी. द वन ऑन द लेफ्ट इज योर्स एंड द ग्लास ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि ग्लासेस भी लेफ्ट हैंड साइड पे भी होंगे, राइट हैंड साइड पे. तो एक इंडिविजुअल डाइनर के लिए जो लेआउट होता है ब्रेड, मील, वाटर. ब्रेड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, मील सेंटर में और वाटर राइट हैंड साइड पे. ऐसा याद रखेंगे तो कभी भी गलती से आप किसी और का ग्लास उठा के उसकी ग्लास से पानी नहीं पिएंगे, एंड इट विल सेव यू एम्बैरेसमेंट एंड द एम्बैरेसमेंट टू द अदर पर्सन. द रूल नंबर 2 इज यू ऑलवेज मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. इसका मतलब क्या, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे बाहर सूप स्पून रखा है. इसका मतलब जो पहला कोर्स आपको इस टेबल पे सर्व होगा वो होगा सूप. वो सूप आएगा, आप ये स्पून उठाएंगे, सूप पिएंगे, एंड दैट bowl will be clear. Now we are moving from outside to inside. So the second cutlery that you can use is the salad fork. Next, what you will be served will be salad or starter. So the salad and starter, you will use this fork to eat the salad and the starter. Next, you eat the salad and this fork will be cleared. Next, what will come on your table will be the main course. So you will use this spoon, knife and fork to eat your main course. तो अगर आप notice करें, you're moving from outside to inside. The glasses on your right hand side are the water glasses and the plate here is your bread plate. Any spoon or knives kept horizontally above your plate is for dessert, मीठे के लिए.
वो यहाँ ऊपर रखा रहता है. So that is a typical meal. बहुत रेस्टोरेंट्स में 3 forks होते हैं. So they give you a separate fork for salad, then for starters and then for dinner. So you know what to do. जो सबसे बाहर रखा है वो सैलेड के लिए या स्टार्टर के लिए यूज होगा, जो भी पहले आया. उसके बाद नेक्स्ट आप उठा के नेक्स्ट कोर्स के लिए यूज करेंगे एंड देन द डिनर fork for the main course. These are the 7 courses that we typically hear of and see. ये है एपेटाइजर, पहला कोर्स. इंडिया में हम बहुत रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहां वो हमको पीनट्स या पापड़ या पॉपकॉर्न या ऐसे कुछ निकनैक नमकीन हमें देते हैं जस्ट टू स्नैक अपॉन, जब तक हम अपना ऑर्डर प्लेस करें फिर हम फूड अराइव्स. दैट इज कॉल्ड एन एपेटाइजर. इट बिल्ड्स योर एपेटाइट. यू नो, भूख में लोग आते हैं बैठे होते हैं तो दे गिव समथिंग फॉर देम टू snack on. That's your first course, the appetizer. Then of course is the soup, salad, starters, then main course and dessert. इसे बोलते हैं सोरबे. इट्स लाइक अ बर्फ का गोला बेसिकली. इट्स गिवन टू क्लेंस द पैलेट. जब सैलेड और स्टार्टर्स के बाद आपको पूरा अपना पैलेट क्लीन करना हो फॉर द मेन कोर्स, तो ये सर्व होता है. Very top rated 5-star restaurants give the sorbet too. So that's your 7-course meal in a 5-star restaurant. Some things about napkin etiquette. You always keep the napkin in your lap. Wait for the host or the boss to pick up his napkin and keep it in his lap, and then you pick up your napkin and keep it. This is a wrong way of wearing a napkin ever. So when excusing yourself, जब अगर आप खाना खा रहे हैं और बीच में आपका फोन आता है या आप रेस्टरूम यूज करते हैं या किसी से कोई बात करने के लिए आप उठते हैं, so you do not leave your napkin on the head or the table. You leave it on the seat of the chair. This simply means कि मेरा खाना खत्म नहीं हुआ है. I'm coming back. I'm not finished yet. You use the napkin to dab the corner of your mouth. ये नैपकिन पसीना पोंछने के लिए या मुंह पोंछने के लिए या नोज ब्लो करने के लिए नहीं होता. We only use this dinner napkin to blot or clean the corner of your mouth. You use your index finger, wrap the napkin around it, उठा के just slightly आप अपना corners wipe करिए and you put it back on your lap. Place the napkin to the left of the plate at the end of the meal. This simply means जैसे आपने प्लेट के पास टेबल पे अपना नैपकिन रख दिया ना, लेफ्ट और राइट एक्चुअली डजंट मैटर, बट typically left. If you leave it there, it simply means I'm done. I'm finished eating. So that's where you keep your napkin when you finish eating. और अगर कोई stain या कुछ लग गया हो नैपकिन पे हाथ पोंछने की वजह से, तो make sure that you cover that stain. That's the correct way of holding a fork and knife. अगर आप fork और knife को correctly पकड़ेंगे नहीं, तो खाना खाने में हमेशा बहुत तकलीफ होगी. So the right way to hold a fork and knife is, this is wrong. The right way to hold it is the way we saw here. The index finger should be on the neck of the fork and the knife. There are 100 YouTube videos to see how you hold the fork and knife to eat. The cutlery should be inside your hand, not jutting out. इसलिए ये गलत है. ये ऐसा लग रहा है कि आप खाने का खून कर रहे हैं. You are stabbing the food. But we are not stabbing it. Okay, we want to eat it. So that's the right way of holding it. Keep your index finger on the neck and the cutlery should be wrapped inside your. That's your resting position, which means अगर आप खाने के बीच में पूरा टाइम तो फोक और नाइफ हाथ में रख के बैठेंगे नहीं. If you're talking or you're discussing something, तो आप अपनी cutlery या British, the one you see left hand side, या ये दोनों तरीके से रख सकते हैं. If you're somebody who has cut his foods into many pieces and kept the knife down and now is using the fork, you could do it the American way or the British way. That's your finished position. एक बार आपने अपनी कटलरी, once you finish eating, you leave your cutlery together like this. ये सारी पोजीशंस इसलिए है कि हम सर्विस स्टाफ को बता सके कि अभी मेरा मील चालू है, मेरी प्लेट क्लियर मत कर दो, या अब मैं खा चुका हूँ, मेरी प्लेट क्लियर कर दो, ले जाओ. So that they don't, for a big group, necessarily keep coming and asking you कि आपकी प्लेट क्लियर कर दें सर, आपकी प्लेट क्लियर कर सकते हैं. They don't disturb you. So ये सब पोजीशंस उनके लिए क्रिएट करी गई है. And if you know them and if you are sitting on a dining table with
dignitaries and you know these etiquette rules, it gives you a lot of confidence when you're dining. So, good service staff of five-star restaurants, the service boys are trained on this kind of understanding these signs. Now, eating Indian food. If you have been served Indian food, there is no wrong etiquette in eating it with your hand. बहुत सारा हमारा खाना ऐसा है जैसे ये थाली है या anything that we eat, we can absolutely use our right hand because it's very difficult to eat some of the Indian food with a fork and knife. But एटिकेट हमेशा याद रखिए कि आपके साथ जो लोग बैठ के खाना खा रहे हैं उन्हें डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए, उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं लगना चाहिए. तो रिमेंबर, यू ईट इंडियन फूड विथ योर राइट हैंड and you try and use only these three fingers. If you are a lefty और आप right hand से नहीं खा सकते हैं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, then try and sit on the corner of a table where your moving hand doesn't bother anybody. Everybody else will eventually use their right hand only to eat the Indian food. So if you make sure that you use only these two parts of the three fingers and use only these three fingers to eat Indian food, you'll realize that you'll end up eating the food in a very comfortable manner and it will not bother anyone. When you're eating dal and rice on Indian food, make sure that you don't pour the entire bowl of dal on the rice. You take little dal, keep mixing it with the rice and eating it. It just makes the plate look more neat and nice and makes other people comfortable. Some buffet etiquette before we finish up or wrap up. Remember, in a buffet, do not push and wait for your turn. If you're standing in queue, patiently wait. Do not start serving from the middle. Begin from the start and then move ahead in that direction. Don't jump a queue. कोई आपके आगे खड़ा है तो उसके आगे मत चले जाइए. आपको कितनी भी भूख लग रही हो, ये याद रखिए. Dining room, mess and dining table is the best place to make a wrong impression or spoil an impression about yourself. So never eat while you're standing. आप खड़े हैं, पापड़ डाल चुके हैं, खड़े खड़े पापड़ या सैलेड या ककड़ी उठाकर खा रहे हैं. That's not a very nice thing to do. Do not wipe the buffet dishes clean and do not use your fingers to serve. Always use the spoon or the tongs. Keep the plate very close while serving and after serving yourself, leave the serving spoon in the platter. जिस plate आपको रखना चाहिए. Sorry, somebody saying something? If you touch anything, कोई भी चीज को अगर आप बुफे में टच करते हैं, तो make sure you don't put it back. It should be in your plate. Do not heap your plate. एक पहाड़ मत बनाइए. 3 to 4 dishes is ideal. 3-4 चीजें लीजिए और बुफे में आपको हर बार आप एक फ्रेश प्लेट ले सकते हैं unless you are at a wedding, क्योंकि वेडिंग में होस्ट को चार्ज होता जाएगा. बट अगर आप एक रेस्टोरेंट में बुफे पे खा रहे हैं तो अपने स्टार्टर्स खाइए, फिर एक फ्रेश प्लेट ले लीजिए, सैलेड खाइए, फिर एक फ्रेश प्लेट ले सकते हैं. If there is an accident, a spill on the table या fork or spoon आपका नीचे गिर जाता है, don't bend down and pick up your fork and spoon. Wait for making eye contact with the serving boy and later tell him कि आप ये यहाँ से उठा लेना. अगर कोई लिक्विड या कोई ग्रेवी गिर जाती है तो वेरी क्विकली अपना नैपकिन उठा के उस पर रख दीजिए जैसे वो लिक्विड औरों पे स्पिल होके ना चले. And then later tell somebody to clear it. Everybody makes a mistake. Don't make, I'm so sorry, this and that. Just stay calm. Everybody makes a mistake, just cover it up and it's fine. Never pick your teeth in public. If there's food stuck in your teeth, try to remove it with your tongue. Go to the restroom and remove it the way you want to remove it. Don't you? बहुत लोग ऐसे भी toothpick use करते हैं. I wouldn't recommend that. And just before we finish, if you've been given tea with a tea bag, wrap it around the spoon and squeeze out the excessive tea first. अदरवाइज वो टी बैग अगर आपने डस्टबिन के अलावा और कहीं भी रखा या डाला तो बहुत सारी चाय उसमें से स्पिल हो जाएगी. अगर आपने अपने सॉसर पे भी रख दिया तो पूरा सॉसर विल बी फ्लोटिंग विथ द टी एंड दैट माइट कॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर. So last note before we finish, remember that some topics on the table must never be picked up. Good discussions or good topics to have to make small talk with people are compliments, या आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, टाई बहुत अच्छी है, etc. Food, wine, decor, weather, cricket, sports, music. These are good topics. Topics you stay away from on the dining table: politics, war, relationships, personal questions, terrorism, terrorists, or loo talks.
talks about the bathroom. Stay away from such kind of topics on the table. Remember, it's not what's on the table, but the person who's sitting on the chair makes the dining experience special. It what makes the meal and experience special. So I hope whatever we have discussed today, you use it as a habit building, as like an investment that you're making for yourself in the future. My email address is still up on the screen. If you have any question, please feel free to email me. There's one question, I'll just quickly take it. We should not talk while eating, but if someone asks a question, that's a good question, Akansh. We shouldn't talk. You should never talk or open your mouth. That's why we say close your mouth and chew your food. You should never open till there is food still in your mouth. And इसीलिए मेरा पहला टिप ये रहेगा कि छोटे छोटे बाइट्स खाइए, जिससे चबा के खत्म करना बहुत आसान होता है, स्पेशली जब आप बिजनेस डिनर्स पे, नॉट पर्सनल एंड सोशल. तो छोटे बाइट्स को मैनेज करना आसान होता है. अगर आपके बाइट में मुंह में बाइट है, तो इशारे से सामने वाले को कहिए कि जस्ट मिनट, गिव मी अ मिनट, finish chewing your bite, preferably take a sip of water and then start talking. So yes, we should never talk while. So if somebody asks you a question, wait for you till you finish